Hello bachcho, let us look at this question which says in the reaction aluminium chloride plus Cl negative chloride ion gives AlCl4 with a negative charge. Okay, so in this reaction aluminium chloride can be classified as. So in this reaction we have to identify the role of aluminium chloride, whether it is acting as an acid, base or salt. Key concept is acid base theory. तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि whether it is acting as an acid or base, there is a theory called Lewis theory of acid and base. ओके इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कुछ ऐसे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन bonding electrons. Now, what are non-bonding electrons? These are lone pair of electrons. Okay, तो ऐसे molecules जो non-bonding electrons को या lone pair को accept कर सकते हैं, these are classified as acid. Okay, तो acids are non-bonding electron pair acceptor, whereas all those molecules or ions which can donate non-bonding electrons, that is lone pair, ऐसे compounds को, ऐसे molecules और ions को हम base classify करेंगे. Base are lone pair donors, right? तो ये classification है on the basis of Lewis theory of acid and bases. अब हम अपनी reaction जो question में हमें provided है उसे देख लेते हैं. So the question says AlCl3 plus Cl negative gives AlCl4 with a negative charge. अब हम aluminium को देखते हैं. Aluminium which has an atomic number 13, इसका configuration क्या होगा? Electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1. Okay, अब हम देखें तो यहाँ पे p orbital, ये p orbital में सिर्फ एक single electron present है, इसका मतलब ये vacant है. Okay, vacant p orbital is present in aluminium. Vacant orbital means it is electron deficient in nature. It has electron deficiency. Electron deficiency makes it able to accept electron. अब electron की deficiency है तो ये electrons accept कर सकता है. Okay, अब जबकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया या इसके पास एक कैपेसिटी है दैट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इट मेक्स इट अ Lewis acid because acids are lone pair or electron acceptors. तो it is Lewis acid. Okay, अब हम रिएक्शन में भी अगर देखें तो AlCl3 is forming AlCl4 negative. So it is accepting electrons from Cl negative. तो Cl negative को accept कर रहा है with its negative charge electron. So it is acting as an acid. So the correct option is in the reaction AlCl3 plus chloride gives AlCl4 negative. AlCl3 or aluminium chloride can be classified as an acid. I hope you understood this concept. Thank you.